Welcome you all. Today we are here with another idiomatic expression, and that is bed of roses. This is very famous idiomatic expressions used in a reference to a situation or activity that is comfortable or easy. इसको हम उर्दू में आराम की ज़िंदगी या जिस तरह से हम कह रहे होते हैं कि फूलों की सेज, इसको हम कह सकते हैं। बात अब ये होता है कि हमारी ज़िंदगी में सारी चीज़ें बहुत ही आसान होती हैं करना, हमें इजी जॉब मिल जाती है, आराम से हम कर रहे होते हैं, लाइफ चिल होती है, तो वहाँ पे हम यूज़ कर सकते हैं द लाइफ इज़ बेड ऑफ रोजेज़। हियर इज़ अनदर सेंटेंस और हाउ वी आर गोइंग टू यूज़ इट। मेकिंग मनी इज़ नॉट अ बेड ऑफ रोजेज़, यू हैव टू वेक अप अर्ली एंड गो टू वर्क। यानी पैसे बनाना इतना आसान नहीं है, आपको इसके लिए सवेरे उठना पड़ता है और काम पे जल्दी जाना पड़ता है। Here is another sentence or situation. Of course, that project is no bed of roses. Why else would they assign it to a lowly intern like me? So once again we have used here no bed of roses. So this is how we are going to use this idiomatic expression in these sentences.